Today I will give a special lecture on the biology subject, and the topic related with the biology subject is immunoglobulin. So today our special lecture is based on the topic that is immunoglobulin. तो इससे पहले जो हम बेटे डिस्कस करते रहे all the topics that are related with the chemistry subject, but today I will take the biology subject, and the topic that is related with the biology subject is immunoglobulin, and this topic is very important. So let us start with our topic, that is immunoglobulin. Immunoglobulin. So it is our topic, and this topic is related with your biology subject. So before starting this lecture, so it is the part that is related with the biology subject. And what do you mean by the term immunoglobulin? So it is made up of two parts. One is the immuno and the second one is the globulin. That means immunoglobulin is made up of two parts. It is divided into two parts. One is the immuno and the second one is the globulin. So what do you mean by immuno? Immuno का मतलब क्या है बेटे? Immuno means immune system. It stands for immune system. So the immuno means immune system. And the second one is globulin. Globulin is actually the proteins. So immunoglobulin is made up of two parts, or it is divided into two parts. One is the immuno and the second one is the globulin. Immuno means immune system and the globulin means proteins. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे बेटे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्यूनोग्लोबिन. दो पार्ट से मिलकर बना हुआ ये. वन इज द इम्यून सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द प्रोटीन्स. सो एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन जो है, दीज आर द एंटीबॉडीज. दीज आर द एंटीबॉडीज. So these are the antibodies. अब मुझे ये बताएं कि आप एंटीबॉडीज होते क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज होते क्या है? तो एंटीबॉडीज होते हैं बेटे, वो क्या होते हैं कि एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं है. तो एंटीबॉडीज होते हैं, दीज आर एक्चुअल द एंटीजेंस. एंटीबॉडीज आर द एक्चुअल द एंटीजेंस जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसके बाद वो एक इम्यून जनरेट करते हैं. सो एंटीबॉडीज आर एक्चुअली द एंटीजेंस जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो एक एंटीजन जो थे वो प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एक एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, या हम प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो एक्चुअली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, दीज आर द एंटीबॉडीज जो कि एक एंटीजेंस को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये हमारी रक्षा करते हैं या हमें बचाते हैं. So immunoglobulin is actually these are the antibodies. और सबसे पहले अब हमें देखना है कि इन इम्यूनोग्लोबिन को प्रोड्यूस कौन करता है. इम्यूनोग्लोबिन, these are produced by the white cells, white blood cells. These are produced by white blood cells. So these are produced by the white blood cells. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको कौन प्रोड्यूस करता है. So these are produced by the white blood cells. अब इनका जो केमिकल नेचर है बेटे, केमिकल नेचर क्या है इनका? द केमिकल नेचर जो है हमारा इनका, वो है बचाना. किस चीज से बचाना? हमारा जैसे टॉक्सिन से बचाना. अब टॉक्सिन्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है. तो इन चीजों से इन एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि हमें बचाना. तो एक्चुअल में जो इनका जो नेचर है वो क्या है? टॉक्सिन से बचाना. टॉक्सिन्स से बचाना. अब वो टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं? सच एज बैक्टीरिया, वायरस, नेक्स्ट फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर कोई भी एलर्जेंस है.
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलर्जेंस, कोई भी इस तरह के टॉक्सिन्स हैं उनसे क्या करते हैं, ये बचाते हैं. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या एनी टाइप ऑफ द एलर्जेंस. उन सब से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. एक्चुअली जो आपके इम्यूनोग्लोबिन है बेटे, या एंटीबॉडीज जो है, ये आपके एंटीबॉडीज जो थे ये एक्चुअल में किस शेप के हैं? द एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज आर ऑफ वाई शेड. दीज एंटीबॉडीज आर ऑफ वाई शेड. These are actually of Y shape. तो किस शेप के हैं बेटे? Y शेप के हैं. So these antibodies are actually of Y shape. तो यहां देख सकते हैं बेटे, these antibodies are actually of Y shape. तो अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कि स्ट्रक्चर क्या है इम्यूनोग्लोबिन का. नेक्स्ट अवर मेन टॉपिक that is related with the immunoglobulin is what is the structure of the immunoglobulin. तो अब हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं, what is the structure of the immunoglobulin. Next topic is structure of IgS, that is immunoglobulins. So this is the structure. So what is the structure of immunoglobulin? तो अब इसमें हम देखेंगे बेटे कि जो स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबिन का, एक्चुअल द स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स. हम पहले लेंगे फर्स्ट 2 identical heavy chains. 2 identical heavy chains, and the second one is 2 identical light chains. So the structure of immunoglobulin is divided into 2 units. One is the 2 identical heavy chains and the second one is 2 identical light chains. So our structure of immunoglobulin is divided into 2 chains. 2 चेन्स हमारे पास. अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. इट इज डिवाइडेड इनटू So these are the identical chains. 2 are the heavy chains and 2 are the light chains. अब इसमें हम ये देखेंगे बेटे कि इसमें जो यहां तक जो हमारा रीजन है, सो दिस इज द रीजन, और ये जो हमारा रीजन रहेगा बेटे इस तरह का, ये रहेगा हमारा वेरिएबल रीजन. दिस इज द वेरिएबल रीजन. और जो हमारा इस तरफ को रेस्ट पोर्शन बच गया बेटे, सो दिस इज द कांस्टेंट रीजन. सो दीज आइडेंटिकल चेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 regions. One region is the variable region and the second one is the constant region. सो यहां तक जो आपका पार्ट है बेटे, इट इज द वेरिएबल रीजन. जो रेस्ट आपका पार्ट बच रहा है दैट इज द कांस्टेंट रीजन. दैट मींस दीज 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स और लाइट चेन्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स. वन इज द कांस्टेंट रीजन एंड द सेकंड वन इज द वेरिएबल रीजन. अब ये हो गया आपके 2 रीजन्स बेटे. अब हम यहां देखेंगे कि इनको जो जुड़ी है S1 S2 S S S S S S. So these are the, ये जो हमने बनाएंगे बेटे, ये कौन से बॉन्ड्स है? These are the disulfide. These are disulfide bonds. ये कौन से बेटे? Disulfide
bonds. Disulfide bond. These are the disulfide bonds. कौन से bonds है बेटे ये? These are the disulfide bonds. So, and both these chains, heavy chain as well as light chain, both these chains are of polypeptide nature. इनका जो nature है दोनों chains का, either it is the heavy chain or the light chain, दोनों chains का जो nature है that is of polypeptide nature. Remember one thing, both the chains are of polypeptide nature. इनका जो nature है बेटे वो कैसा है? Polypeptide nature है. So these are the two identical chains, and one is the heavy chain and the second one is the light chain. So it is the structure of the immunoglobulins, and the structure of the immunoglobulin is divided into two identical units. One is the two identical heavy chains and the second one is two identical light chains. अब next हम आगे देखते हैं बेटे. Our next part is immunoglobulin classes. Immunoglobulin classes, that is IG classes. It is our next topic, immunoglobulin classes. So इसको हम देखेंगे, इसको हम किस ट्रिक की हेल्प से यूज कर सकते हैं? गेम्ड. गेम्स करते हैं तो वहां पर एस को हटाकर आपने क्या करना है? डी लगाना है. गेम्ड. अब पहले हम जाते हैं जी के ऊपर. पहला जो हमारा, हम इसको शॉर्ट तरीके में अभी आपको सिर्फ ब्रीफिंग में बताएंगे कि कौन कौन सी हमारी इम्यूनोग्लोबिन की क्लासेस हैं, और फर्दर फिर उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. जस्ट दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस. सो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर देयर? सो फर्स्ट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज IgG. So it is the first class of immunoglobulin. और क्या है ये? It is the largest in number. सबसे बड़ा नंबर में जो इम्यूनोग्लोबिन क्लास है वो हमारी कौन सी है? IgG. So it is largest in number. Largest in number. 75% जो है ये क्या करती है? कवर करती है कौन सी क्लास? IgG. 75%. 75%. नेक्स्ट क्लास हमारी आती है बेटे, कौन सी है? Our next class is IgA. It is our next class. IgA. It is the next class. Second class IgA. And this is the special class of the immunoglobulin. It is breast milk. It is related with the breast milk plus. It is related with the breast milk plus mucus plus blood. That means IgA कहाँ प्रेजेंट है आपका? ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकस में प्लस ब्लड में. सेकेंड वन इज म्यूकस एंड ब्लड. So IgA, it is present in the breast milk, mucus and blood. Now we shift to the third part of immunoglobulin, and your third class, it is IgM. IgM. It is the third class, IgM. Largest in size and first to response. सबसे बड़ी बात यह है कि it is largest in size. Largest in size. And the second most important feature of IgM, that is first to response. सबसे पहले respond करता है ये, first to response. So the most important feature of the IgM, that is it is largest in size and first to respond. Next is our fourth class, and your fourth class is IgE. IgE. It is fourth class, IgE. It is related with the hypersensitivity. Hypersensitivity. It plays an important role in hypersensitivity, and it also plays an important role in the allergic reactions. Allergic reactions. So this is the brief
introductory part of the various immunoglobulin classes. So the main important role of the IgE, that is, it plays an important role in hypersensitivity as well as in the allergic reactions. Next, fifth class, and the fifth class of immunoglobulin classes is IgD. IgD. So what is the important role of IgD? That is differentiation of B lymphocytes. Differentiation. Differentiation of B. Differentiation of B. So these are the various immunoglobulin classes, and there are 5 classes of the immunoglobulin. One is the IgG, that is largest in number, 75% ये हमारी body में present करता है. Second one is the IgA, it plays an important role in breast milk, mucus and blood. Third one is IgM, it is largest in size and it plays first important role or first to response. IgE, it plays an important role in hypersensitivity as well as allergic reactions. And the last one is IgD, it plays an important role in the differentiation of B. नेक्स्ट अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटे. तो डिटेल में अब हम जाएंगे तो हम सबसे पहले हमारा जो मेन इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस है वो कौन सी हमारी बेटे? IgG. So it is our first important class of immunoglobulin, IgG. अब IgG में क्या करेंगे बेटे? मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन. ये क्या है हमारा? मेजर सीरम immunoglobulin. So it is the first most important feature of IgG, major serum immunoglobulin है. And second one is its molecular weight is इसका molecular weight कितना रहेगा बेटे? 1,50,000. 1,50,000. It is most second important feature of IgG. Molecular weight is 1,50,000. Only to cross placenta. It is the most important feature, only to cross placenta. Only to cross placenta. Only the IgG is the immunoglobulin which has the capability to cross the placenta. सिर्फ और सिर्फ IgG में कैपेबिलिटी है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IgG, only to cross placenta. And natural passive immunity. Passive immunity. Natural passive immunity. Chronic illness. It is the next important feature, chronic illness. And appears late. सबसे और important feature जो इसका IgG का है, appears to late. ये सबसे late दिखता है. Appears to late but persists longer. पर इसका जो body में effect रहता है वो काफी time तक रहता है. No doubt late appear होता है, appears late, but जो इसका एक इफेक्ट है बट इट परसिस्ट लॉन्गर, पर ये बॉडी में लॉन्ग टाइम तक जो है वो सर्वाइव करता है. सो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका बेटे वो क्या है? दैट इज appears late but persists longer.
So these are the important features of IgG. Next, we shift to the next part of immunoglobulin, that is IgA. It is next immunoglobulin, that is IgA. It is our next immunoglobulin IgA. तो इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है बेटे, में ये सेकंड मेजर सीरम है IgA. इट इज द सेकंड मेजर सीरम. तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेकंड मेजर सीरम है ये, सेकंड मेजर सीरम. ये हमारा सेकंड मेजर सीरम है IgA. और 10 to 30 सेकंड मेजर सीरम है हमारा ये Ig. और ये कितना परसेंट प्रेजेंट है बेटे, 10 to 13%. 10 to 13% ये प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट है इट अकर्स इन टू फॉर्म्स. इट अकर्स इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में अकर करता है ये. इट अकर्स इन टू फॉर्म्स. So it is our next important feature. It occurs in two important forms. And what are these two important forms? One is serum IgA. Serum IgA. It is the first important form, IgA. And the second one is secretory IgA. Secretory IgA. So these are the two forms of IgA. One is the serum IgA and the second one is the secretory IgA. और इसमें जो इसका रेशियो प्रेजेंट है that is 1,60,000. 1,60,000. कितना है? 1,60,000. It is second important feature. Now third feature is present in serum. Present in serum. Present in serum. Third important point, present in serum and secretions. And secretions like present in serum and secretions like breast milk, present in serum and secretions like breast milk and saliva, tears, etc. Saliva and tears, etc. So next immunoglobulin, that is IgA. The most important feature of IgA, that is it is present in the serum and secretions like breast milk, tears and saliva, etc. Next important feature of IgA is half life cycle is, or half life is only for 6 to 8 days. Half life 6 to 8 days. So half life it is only for 6 to 8 days. कितने days के लिए रहती है? 6 to 8 days के लिए होती है. So it is our second immunoglobulin and the naming is IgA. Now we shift to the third immunoglobulin and the third immunoglobulin is कौन सा बेटा? Third immunoglobulin. It is our second. Third immunoglobulin is IgM. IgM. It is our third immunoglobulin IgM. So IgM is pentamer. IgM is pentamer. That means it is present in the 5 chains. Penta means 5. It is present in 5 chains. So most important feature of IgM is it is, क्या कहेंगे बेटे जो? It is a pentamer. It is a pentamer. So it is the most important feature of IgM. It is pentamer. It is pentamer and 5 to 8. इसमें आगे लिखते हैं 5 to 8% total serum concentration. 5 to 8% total serum concentration.
It is pentamer, 5 to 8% total serum concentration. Heavy molecule है ये, heavy molecule, heavy molecule. And heavy molecule में कितना present है बेटे? 9 lakh to 10 lakh. 10 lakh. सो हैवी मॉलिक्यूल है, इसका जो क्वांटिटी प्रेजेंट है 9 लाख से लेकर 10 लाख तक है. एक्यूट इलनेस है, एक्यूट इलनेस, एक्यूट इलनेस एंड फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, फर्स्ट टू respond. So these are the features of IgM. It is pentamer. It is present in 5 chains. 5 to 8% total serum concentration present है. Heavy molecule है. 9 lakh से लेके 10 lakh तक इसका जो molecular weight है. Acute illness है and first to respond है. Next आगे हम चलते हैं बेटे. IgE. It is our next immunoglobulin. IG गेम्ड कहा था, GAMED. अब इसका D बचा हमारा IgE. इट इज नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन IgE, जिसमें हमने कहा था कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शंस. सो मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबिन that's to play in hypersensitivity as well as in the allergic reactions. So what are the main important features of IgE? So it is produced in linings of respiratory. It is produced in linings of respiratory. Linings of respiratory it is produced in linings of respiratory and intestinal tract. Intestinal tract. It is produced in linings of respiratory and intestinal tract. So the most important feature of IgE, that is produced in the linings of respiratory and intestinal tract. Second क्या है बेटा इसका? Molecular weight. Its molecular weight is molecular weight. So the molecular weight is 1,90,000. 1,90,000. So it is the molecular weight 1,90,000 and it resembles with IgG in structure. इसका जो structure है it totally resembles with IgG. अब IgG क्या था बेटे आपका? That is largest in number and 75% that is covered by IgG. So the structure of IgE that is totally resembles with IgG. So resembles IgG, resembles IgG in structure. So IgG, it is largest in size and it is largest in number, not size, but it is largest in number and 75% is covered by IgG. अब next जो हमारा है बेटे एक और इसमें कि it plays an important role in hypersensitivity and allergic reactions. Hypersensitivity and allergic reactions. Hypersensitivity and allergic reactions. Now we shift to the last immunoglobulin of our today's lecture and it is IgD. It
is our last immunoglobulin, or it is the last topic of our today's lecture, that is IgD. It plays an important role in differentiation of the B lymphocytes. The major important role of IgD, that it plays an important role in the differentiation of the B lymphocytes. Second one is its molecular weight is 1,80,000, and the last third one is it resembles again with IgG in structure. So the first important feature of IgD is differentiation of B lymphocytes. सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा इसका, वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgD इज 1,80,000. And the last important feature of IgD is resembles IgG in structure. IgG in structure. So these are the various types of the immunoglobulin. That means immunoglobulin, मैंने पहले कहा था कि immunoglobulins are actual the, क्या है वो, आपके दो शब्दों को मिलकर बना हुआ आपका इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन. इम्यूनो जो है वो क्या है आपका इम्यून सिस्टम है, प्लस ग्लोबुलिन जो है दीज आर द प्रोटीन्स. सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. तो आप यहां देख सकते हैं हमारा कि आज सारा हमने देख लिया है कि इम्यूनोग्लोबिन्स होते क्या है और इम्यूनोग्लोबिन की वेरियस टाइप्स कौन सी हैं, जिनको हमने शॉर्ट वे में भी पहले आपको बताया कि IgG क्या है, लार्जेस्ट इन नंबर है, 75% बॉडी का कवर करता है. IgA जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस प्लस ब्लड. IgM जो है इट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड इट फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. IgE जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शंस. एंड द लास्ट वन इज IgD. It plays an important role in the differentiation of the B lymphocytes. Next क्या था बच्चे आपका, what is the structure of the IgS? So structure of immunoglobulin, it is divided into two identical units. One is the two identical heavy chains and the second one is two identical light chains, and these two chains are actually the polypeptide in nature. Both these chains are of polypeptide in nature, and there are two regions in these two chains. तो वो दो रीजन्स चाहे वो लाइट चेन्स के हैं या आपके हैवी चेन्स के हैं, तो वन रीजन जो यहां से यहां तक आपका रीजन दिख रहा है, दैट रीजन इज नोन एज वेरिएबल रीजन एंड द रेस्ट रीजन इज नोन एज द कांस्टेंट रीजन. और जो इनके बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हैं आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. और these are the various types of the immunoglobulins of our today's lecture. And immuno means immune system, globulin means proteins, and these are actually the antibodies, and antibodies are produced by the white blood cells. And what is the important role that is to be played by the antibodies? So the main important role of the antibodies is to protect from the toxins such as bacteria, virus, fungus, as well as various types of the allergens. So the main role of the antigens is to protect from the toxins. So this is the main important role of the antibodies, and these antibodies are actually of Y shape. So I hope ये lecture आपको समझ आ चुका होगा. So we will meet again with new lecture in our next lecture or next video.